वो लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। मेरी वाइफ ना दीपिका पादुकोण जैसी होनी चाहिए। अरे हमको डिनर में कैंडल लाइट डिनर में जाके बैठना है और ऐसे बैठना है, आंखों में आंख डाल के बैठना है, और वेटर 4 बार मेनू कार्ड बीच में हिला के गया, फिर भी फेविकॉल का जुड़ है, टूटेगा नहीं। तो हमारे साथ एक लेजेंडरी शख्सियत है, वो इस्कॉन मंदिर से भी रिलेटेड है, एंड ही इज समबडी हु कम्स इन फ्रॉम द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग, अ पुणेकर, एंड ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दिस वॉइस इन दिस गॉर्जियस फेस of this motivational speaker and somebody who can coach you on living a better life. Jai Shri Krishna, Prabhuji. Jai Shri Krishna. Thank you very much for having me over. So imagine a husband telling a wife that there is, and you being the lady of the house have to take care of the kitchen, and this is both where the husband and the wife are working. What would you like to say? A hierarchy in even the way we run our house. The very fundamental understanding in a relationship is wrong when someone thinks like this. अगर कोई ऐसा सोचता है कि मेरा काम पैसे लाने का है और इसका काम घर चलाने का है, तो ये फंडामेंटली गलत है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, someone, a lady who's not like a working lady, उसने कुछ ऐसा, she's not done anything to go and earn money outside. So if a man is bringing in the money and he's expecting her to take care, that's understandable. Shared responsibilities है, मैं ये करूँगा, आप ये करेंगे. Now you have both working. Yeah. Right? If you are both working, the husband's working, the wife's working, and the husband's thinking, we're both working, we're both breadwinners, we're both bringing money, but घर का काम आपका है. How? I mean, who's given you the right to even say that? Who's given you the right to even assume that? And vis-a-vis, vice versa as well. Yeah. From the ladies, I'm not being gender specific. Yeah. I'm just explaining the principle. Wedding, even when you get married, you're actually committing yourself to share everything in life. Yes. Dukh aur sukh to share your joys and sorrows, to share your physical space, to share your emotional space, to share your hearts, to share your love, and also to share your responsibilities. But do you think that this thought is resonating in the larger part of, say, India now? People are so disgruntled with the whole institution of marriage, especially the youngsters today. इतने डिसग्रंटल्ड है, मतलब जो विवाह की संस्था है उसने लोगों को इतना परेशान कर रखा है यंगस्टर्स को कि अगर ऐसी होती ना शादी नहीं करनी मुझे शादी. हाँ. You know, if this is what it means to be married, well, I better stay away. But then I want to tell all the youngsters, don't follow the wrong examples. Yeah. Marriage is not bad. Yeah. The wrong kind of understanding of marriage is bad. Yes. Marriage is amazing. It's a commitment to each other. Imagine having a commitment of a relationship where you actually share your heart. See, I'll tell you, this entire concept of going around with people, I mean, physical fun and kind of, you know, just a hookup and, you know, I'm sorry to say, but ठीक है, one night somebody else another night, move around. भैया आपके जीवन में एक जो हार्ट का स्पेस शेयर करने के लिए कौन है? Whom are you going to share the space of your heart with, where your hearts are so deeply bonded that you don't need to speak. You look at each other and you understand what the other person's going through. That doesn't happen through a hookup. Look, I'm not against or for anything. I'm not against or for. I'm not smashing anything or not being heavy on anything. I'm just talking logic and reason. What are the kind of issues you actually observe? आप पूरे दुनिया भर घूम के आते हैं जी, और relationship is the need of any human being's existence. So what are the kind of issues कर रहे हो? Unfulfilled expectations. Expectations जो है ना, वो fulfill नहीं होती, तो लोग फिर वो love at first sight, divorce at first fight, ऐसा हो जाता है. क्योंकि अपेक्षाएं भी ऐसे unrealistic हो गई है. देखिए, when you live in the real world, you don't have expectations of the real world. You're trying to bring the real world into the real world कि मेरा husband ना मुझे शाहरुख जैसा दिखना चाहिए और मेरी wife ना दीपिका पादुकोण जैसी होनी चाहिए. और आप you ask a शाहरुख खान or you ask a दीपिका पादुकोण in person and they will also tell you that real life and real life are different. They are not hiding it. ज़मीन आसमान का फर्क है. ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है वो कुछ रियल लाइफ में जब बोलते हैं छिपाते नहीं कि ये और ये अलग है, लेकिन हम लोग वो रियल लाइफ को देखकर वो रियल लाइफ को रियल में रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं. अरे हमको डिनर में कैंडल लाइट डिनर में जाके बैठना है और ऐसे बैठना है, आंखों में आंख डाल के बैठना है, और वेटर 4 बार मेनू कार्ड बीच में हिला के गया, फिर भी फेविकॉल का जुड़ है, टूटेगा नहीं. देखिए, आई अंडरस्टैंड वी वांट टू हैव दैट रोमांटिक स्ट्रीक the way Bollywood celebrates or promotes.
नथिंग रॉन्ग. सही जो रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ में अपेक्षाएं, रियल लाइफ की अपेक्षाएं लाने से बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है. So somebody is posting an Insta story and showing that I'm having fun is making somebody else depressed that my life is useless. जब लोग वैलिडेट करेंगे और देखेंगे और फिर पोस्ट पे कमेंट करेंगे, I saw your Insta story, you know, was like cool, you know, like really, it was like savage. ये जो है ना, this has brought out the disorder called FOMO. The entire thing of fear of missing out is because of, see, I'll tell you, social media is not a problem. Social media is problem because it's getting comparative. Everybody is just comparing. I'll tell you what's your greatness. Your greatness is self-acceptance कि मेरी life ऐसी है ना. Let me appreciate what I will do. Most people don't live in their self-acceptance. They live in the mode of comparison where they always look at others and they don't look at themselves. Social media is not an issue. The way we are using it has become a big issue. Comparison, I tell you, believe me, it's already there, and now it's gone to its peak. क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक जैम से लोग बहुत परेशान होते हैं, गुस्से में आते हैं, खड्डे ये वो. एक टिप उनकी, देखिए, जीवन कवि ने एक बार बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया था. 2 सर्कल्स होती है, एक सर्कल ऑफ कंसर्न और एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. सर्कल ऑफ कंसर्न वो चीज सर्कल है जहाँ वो चीज़ें आती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो सर्कल है जहाँ वो चीज़ें होती है जो आपके कंट्रोल में है. लेकिन हमारा मेंटल स्पेस सर्कल ऑफ कंसर्न में इतना ऑक्यूपाई हो जाता है कि जो मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में, उससे इतना मेंटल स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है और मेंटल एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाता है कि जो कर सकता हूँ वो कर नहीं पाता मैं. तो अगर ट्रैफिक हो रहा है, वो मेरे हाथ में है नहीं, तो रोज बैठे बैठे गाली देने से तो ट्रैफिक कम नहीं होने वाला. स्टोरी बनाइए, कनेक्ट विद समवन हूम यू नॉट स्पोकन टू फॉर अ लॉन्ग टाइम. You know, catch up with some rest. Pull out your phone, use the app Headspace and unwind. It's meditation which will bring you to such an amazing state of calm कि जाते जाते you worked on yourself. देखिए, आपको बम्बई जैसे शहर में ना खुद पे काम करने का टाइम नहीं मिलता जी. तो why don't you utilize that time and be in the circle of influence? लेकिन हमारा टाइम वो सर्कल ऑफ कंसर्न में इतना जाता ना, उसने वो बोला, अभी मैं उसको, वो कल बोलेगी ना ये, तो मैं उसको ये सुनाऊंगा, ये मैं ये करूँगी. इन दैट वो मेंटल इसमें ये मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं कितना थक रहे हैं हम. और कल सामने आ जाता है, वो बोलता है क्या कुछ नहीं, वो तो 1 घंटा वेस्ट किया माइंड में, ये बोलूँगी वो करूँगी वो करूँगा ये करूँगी. एंड व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ द पर्सन यू आर लाइक डम. वी गोना आस्क यू one word association. Okay. Life. A journey. Death. Not the end of life. Motivation. To find yourself. Relationships. Service. Meditation. A sense of peace and calm. Love. To live for others. Anger. One letter short of danger. Marriage. Responsibilities more than rights. Social media. A tool to be used, not to be used by. Sakai Mumbai. सगळं चांगलं आहे, सगळं एकत्र चांगलं करूयात.